In this video lecture, we will be discussing some words of vocab. So let's. Our first word for today is illumination. Illumination means the act of lighting up something or making it brighter, or the state of being brightened or lit up. जब आप किसी चीज को लाइक किसी चीज पे आप स्पॉटलाइट में रख रहे हैं, उस पर रोशनी डाल रहे हैं या फिर लाइट पुट इन कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दैट यू आर इल्यूमिनेटिंग दैट थिंग, जैसे आपको इस पिक्चर में भी नजर आ रहा है. इसकी एक एग्जांपल है, द illumination ऑफ द सिटी एट नाइट वाज breathtaking. इसके कुछ synonyms हैं, for example lightning, brightness, radiance, glow, light, shining. और antonyms हैं darkness, obscurity, dimness, gloom, shade, shadow, etc. ये सब इसके antonyms हैं. जितने भी darkness की उसके अंदर लाई करेंगे वो सब इसके antonyms होंगे. Next word is invariably. Invariably means always or without exception. For example, invariably he forgets his keys in office. जो चीज बहुत कंसिस्टेंसी से हो रही है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, जो कि रोजाना एक ही तरीके से हो रही है, जो बहुत कांस्टेंट है, उसके लिए आप इनवेरिएबली का वर्ड यूज करते हैं. इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, फॉर एग्जांपल ऑलवेज, कंसिस्टेंट, consultant, um, constantly, unfailingly, regularly, etc. Or antonyms में obviously it's occasionally, seldom, rarely, sometimes, sporadically या फिर infrequently. जो चीज हर रोज नहीं हो रही है या कभी कभार हो रही है. इसी तरह next word is irritable. Irritable means easily annoyed or prone to becoming angry. यानी कि जो चीज आपको बहुत इजीली अनॉय कर दे और बहुत जल्दी आपको चिढ़ने पर मजबूर कर दे, तो हम कहते हैं कि दैट पर्टिकुलर थिंग इज इरिटेबल. इसकी एक एग्जांपल है, he was feeling irritable after a long day at work. ठीक है, तो ये हो गया irritable word. इसके कुछ synonyms हैं, for example grumpy, grouchy, testy, touchy, edgy या snappy. Antonyms में obviously it's patient, easygoing, calm, relaxed, unflappable, and composed. Next word is insinuated. Insinuated means to suggest or imply something indirectly or subtly. Okay? She insinuated that he was lying without actually accusing him directly. यानी है कि जब आप किसी पर कोई इल्जाम लगाते हैं या कोई चीज सजेस्ट करते हैं या कोई चीज इम्प्लाई करते हैं या कोई सजेशन देते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं देते, एक इनडायरेक्ट मैनर में देते हैं, ठीक है, एक इशारा देते हैं, तो उसको हम यूजुअली कह देते हैं दैट यू आर इंसिनुएटेड. सो इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, फॉर एग्जांपल hinted, suggested, alluded, implied, intimated, indicated. और obviously इसके कुछ antonyms हैं which include stated, declared. अच्छा, आप कोई भी word जो इस चीज को indicate कर रहा है that you are like speaking directly, ठीक है, कोई आप इशारा या सिग्नल नहीं दे रहे, you are saying it directly, openly, तो वो इसका antonym होगा. Announced, disclosed, revealed या proclaimed, etc. The word intently means to do something with great focus या concentration. तो intently मतलब बहुत गौर से कोई चीज करना या गौर से सुनना, ठीक है, या गौर से जो भी आप कोई काम कर रहे हो पूरे फोकस के साथ. She listened intently to instructions before beginning the experiment. तो ये इसकी एक एग्जांपल है. मतलब आपको पिक्चर से भी नजर आ रहा है कि दैट पूरे like in that particular picture the girl is listening to something with full all her ears. तो कोई भी चीज अगर आप फोकस से कर रहे हैं तो that is being done intently. Synonyms includes earnestly, closely, fixedly, resolutely, unwaveringly. Or antonyms, obviously, it's carelessly and attentively, absent-mindedly, unconcernedly, negligently, thoughtlessly. Next word is industry. Industry refers to the specific branch of business or manufacturing activity or the collective effort of the individual involved in such activities. या तो इंडस्ट्री जो है वो एक बिल्डिंग को आप कह सकते हैं, ठीक है, या फैक्ट्री जहाँ पर कोई भी काम हो रहा है, या फिर इंडस्ट्रियस जो है वो इससे एक एडजेक्टिव बनाकर यू कैन से इट्स
रिगार्डिंग हार्ड वर्क, ठीक है, अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है तो उसके लिए भी आप इस चीज को यूज कर सकते हैं. For example, the automobile industry has seen significant growth in recent years with several new companies entering the market. Again, यहाँ पर industry as manufacturing house के तौर पर यूज हुई है, लेकिन आप industry as collective hard work के तौर पर भी यूज कर सकते हैं. Synonyms include business, trade, commerce, manufacturing, production sector. Antonyms include idleness, inactivity, laziness, leisure, and employment, and indulgence. Indolence. Next word is intolerable. Intolerable means something that is unbearable or too much to endure. For example, the heat in the room was intolerable. Intolerable. जो चीज like काबिल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसके लिए आप intolerable का word यूज कर सकते हैं. जैसे आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा है कि that for that particular person thunderstorm is intolerable. जो चीज आपके बर्दाश्त में नहीं रहती. For example, इसके synonyms में unbearable, insufferable, unendurable, unsupportable, unacceptable, oppressive. जितनी भी चीजें bearable की कैटेगरी में फॉल करेंगे, जितने भी वर्ड्स वे सब इसके antonyms होंगे. For example, tolerable, manageable, endurable, acceptable, comfortable. So these are the words for today. इंशाल्लाह ताला बाकी हम next video lecture में discuss करेंगे. Thank you so much. Allah Hafiz.